Hello, this is the unboxing of the Nike's Jordan 1 Retro High Heritage, which I recently ordered from the Nike website, and I've received it just now. I received another package of Adidas, which is in a different video, so I'll go ahead and just start unboxing it. I'll try to do it with one hand. So this is my Bear Grylls knife. And here we go. It has been sent from Singapore. I believe the Singapore outlet is what supplies to India. Hello guys, this is the unboxing of the Nike Jordan 1's Retro Heritage. So I've ordered it from the Nike website and I was lucky. Oh, even the outside box is by Nike. So Nike just, yeah. And this is the first view. I hope it's doing it justice. I don't know what this is. Maybe just another piece of cardboard. Oh my goodness, the box is phenomenal. This is, I believe, one of the best Nike's shoebox ever. It's simple and it's amazing. Get Nike logo on the inside. Just drop it here, and here we go. Oh my goodness. So this is probably one of the best shoes that I have ever purchased. Okay. You can see the hourglass. There are some traits of an original Nike. Oh, this material is amazing. The leather is fantastic, and the famous tumble leather, which is used in the toe here. Oh yes, this is an amazing piece. And the best part is Nike is giving a pair of extra laces with the shoe. They have put in the black ones. Oh, these are amazing looking shoes. Perhaps one of the best shoes which I've ever bought. For the people who are not, जिनको बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता है इंडिया में, जो नए हैं स्नीकर्स को लेके, there are 3 variations of the Jordan 1s. This one is a high, क्योंकि इसका जो एंकल की हाइट आप देख रहे हो, यूज़ फॉर बास्केटबॉल प्लेयर्स, बहुत हाई होता है ये. इसी में एक आता है मिड, जिसकी हाइट करीब इतनी होती है, और एक आता है लो, जो यहाँ कहीं पे ख़त्म होता है. उसमें जो swoosh होता है वो नीचे चला जाता है. But this is the original, one of the greatest designed and one of the most famous shoes ever to be created and born by the legendary king of the court, Mr. Jordan himself. So that is why this shoe is legendary, and I am very happy with the purchase. The retails would go somewhere around
16,000 for a pair, in which the shipping is included if you are living in a tier 2 tier 3 city, or if your current location is somewhere in the jungle. You can order it, they'll just send it to you. And I can't keep my eyes off it. It's strangely beautiful, this thing is. I'll take out the other one also. It's like addictive. You can't, once you start seeing it. ये Nike को इधर रखते हैं. Even the box is like amazing. You can see how it looks like an extension of the shoe itself. See the heritage color way. Many people don't like it in US. US वालों की problem क्या है? उनके पास they are spoiled for choice. But for me, I think this is one of the best Jordans. Just look at it. पहन के निकल जाएगा तो बवाल काट देगा. इसको तो पहनने का मन ही नहीं करेगा मेरा. And yes, the famous, infamous Air Jordan original logo. You can take a screenshot for the reference. And you can see the tumble leather on this as well. Tumble leather है. इसके अंदर का जो material है, and also the smell. Oh yes, it has the smell of an. अब बहुत से लोग बोलेंगे उससे कैसे पता चलता है. Continuing the video. लोग बोलते हैं कि स्मेल से कैसे पता चलेगा, बट स्मेल से बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि आपका कोई चीप रिप्रोडक्शन शू है या फिर ओरिजिनल है. ओरिजिनल नाइकीज़ में ये भी आता है जिसमें जंपमैन का लोगो. आई थिंक यू कैन सी इट, बिकॉज आई कैन सी इट. जंपमैन का लोगो आता है अंदर. ये सब डाई कट स्टॉक लाइनर. तो बहुत से लोग जो इंडिया में जॉर्डन्स क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई बिलीव इफ़ यू आर बाइंग 5 pairs ऑफ कॉपीज, it's better to buy just one, because then you will feel what quality of an original is. It's just insane. I believe this is the best shoe which I've ever purchased. It's amazing it is. Oh. Nikes are, and plus Jordan 1s are number one for a reason. उनकी जो क्वालिटी है ना यार मटेरियल की, दैट इज़ इंसेन. वो रिसर्च करके, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिया, कुछ भी वो कर दिया. इनका हर एक चीज़ जो शू के कंपोनेंट्स है ना, ये सुपर है. इसका ये जो लिप है, शू का लिप बोलते हैं क्या तो भी बोलते हैं. एक और आसान तरीका है फेक पकड़ने का. आप इसकी क्वालिटी देखो, क्वालिटी देखो बस. इट्स इनसेन. मतलब 1 मिलीमीटर का भी इधर से उधर नहीं है. इसकी प्रिंट देखो, पता नहीं इसमें पकड़ पा रहा है कि नहीं. जो बॉक्स है, मेन बॉक्स, वो भी निकालते हैं, वो आपको दिखाते हैं. ये रहा नाइकी का बॉक्स. $1985 है जॉर्डन्स. 8.5 US, Euro 42. वैसे मेरी साइज़ US 9 है. बाकी क्योंकि ये स्नगली फिट करना था, क्योंकि इसका जो टो एरिया वो बड़ा होता है, सो आई हैव ऑर्डर्ड 0.5 साइज लेस. अब ये सब कुछ हटा देता हूँ, सिर्फ इसका बॉक्स रखता हूँ और बॉक्स के ऊपर शू रखता हूँ. तब आएगा मज़ा. ओ भाई साहब,
ओ भाई साहब, गजब गजब ही लग रहा है। ये हैं बेस्ट शूज़ आई हैव एवर परचेस्ड. So that's it.